Alright, so I'm very early today. It's just 8:30. Part of the reason is that because tomorrow I have to go to college and we actually have a company visiting us tomorrow. I don't know what's gonna happen tomorrow, but we stay consistent. We keep doing what we do. So it's the day 5. Right, it's the day 5. Today I'll also revise computer fundamentals. I don't know how long will I stream for because I haven't even had dinner yet. Let's see. Okay, this is the question. I've read the question. But I haven't really actually tried to solve it yet. Let's see. So given a zero index array and an integer value, one operation you can add or subtract value to make it -1. Yep. Okay, we can also add. I didn't know that. The max is the smallest missing non-negative integer in it. Okay, the max. You want to see the smallest non-negative. Let's start with writing what we have. Array given है k is given और एक k given है. We can add slash minus k to every element any number of times. ठीक है ना? We want to find the smallest. We want to find the max smallest positive missing value max की maximum value निकालो. Let's take -1 10. Okay, we have a -1 -10 -10 and 7 13 6 8 7 7 13 6 8 and our k is equal to what is it? It's 5, right? Okay, so what does this mean कि कितनी बारी भी add minus कर सकते हो? This means कि we'll have to play with remainder. We'll have to play with remainder. इसका remainder 1 है. So this can always become can become any value as 5k plus 1. Okay, इसका 0 है तो ये 5k के मल्टीपल में ही रहेगा. Okay, 5k plus 1
right? This can, this will always be 5k. This would be 5k plus 2. This would be 5k plus 3. Okay. 5k plus 1. 5k plus 3. तो हम देखा जाए तो इसे हम ज़ीरो बना सकते हैं, इसे हम ज़ीरो बना सकते हैं ऑलराइट। इसे हम 1 बना सकते हैं, इसे हम 2 बना सकते हैं, इसे हम 3 बना सकते हैं, बट आप 4 कैसे बनाओगे? दैट्स द पॉइंट। You can't make anything as 4, so the answer would always be 4. Is the answer 4? Output is 4. Okay, so right, the answer is 4. You'll have to find the missing remainder. ठीक है, you'll have to find the missing remainder between all the case. हाँ, missing remainder निकालना पड़ेगा हमें। अगर मान लो we had a value as let's say 9, okay? We had a value 9, तो ये बन जाता 5k plus 4. 5k plus 4. ओके, अब इसमें क्या होता, नाउ अब ना आप सारे रिमाइंडर का एक वो बना दोगे, मैप या एरे और व्हाटएवर यू वांट। 0 का आपको मिल रहा है, 0 का एक ही मिल रहा है, 2 के आपको 2, दिस इज 3, दिस इज 1, दिस इज 4. We can actually use a priority queue with a frequency comma value. जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 है या तो वो आ जाए, जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 है वैल्यू 0 है, या जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है। This looks like yeah. What's the k range? The num's length is 10 raised to 5. What's the 52%? Okay, this is a fairly like right question. अब आपको क्या करना है? Now the approach. Man, I hate how we can't change the fucking font size, bro. This is the maximum font size. What's smaller than this? But find the first missing. Find the first missing. What do you call it? Remainder. अगर सारे remainder present है तो choose the remainder with min frequency and min value. With min frequency, अगर min frequency पे die है तो choose the smaller remainder. That's it. तो इसके लिए we can use a priority queue. इसके लिए we can use, what's the value of k? They haven't given a value of k, an integer value. I'll have to ask GPT how to create a priority queue. तो you want a minimum priority queue, right? Priority queue QUE. This will contain a pair of intent. It will use a vector of pair of intent
and it's going to use greater of pair of int, right? That's how you do it. How to create a min heap in CPP for parent. Parentant, vector parentant, greater parentant, min heap. Right. Yeah. PQ. Right now, what you do is for int lef. No. For int I equals to 0, I is less than your val. Make this val. In fact, make this as k I plus plus pq dot insert. How do you insert or push back? Insert. Pq dot insert. The frequency is 0 and the remainder is I. Right. Now what you do is for int lef here are int remainder equals to le percentage k. Int le are equal to 1. Absolute of le percentage k. All right. And then what you do is simply oh hmm how do we like update? You know what? Let's create an unordered map. इसमें rim word स्टोर करेंगे break of rim सबकी कर दो pq dot insert no break of rim I equals to 0. All right. And now you simply do frac of rim
rem plus plus. All right, frequency of remainder. Now what you do is you again go for min frequency equals to int max. Int min remainder equals to int max. We we'll see about that. Int I equal to 0, I is less than n, actually k I plus plus. If frec of rem I is less than min frequency, then what you do is min frequency equals to frec of rem I and min rem equals to I. That's it. That's simply it. ठीक है, अब वो निकल गया. The first priority is there. I got priority if frec of rem equals to I. बराबर फ्रेक सेम है. इनफैक्ट नो, वी वुडंट नीड दिस क्योंकि हम ऑर्डर में जा रहे हैं ना. हाँ, वी वुडंट नीड दिस. इसमें हमारे जीरो एक बार ही आ रहा है. राइट, हम देख सकते हैं जीरो हमारा एक बार ही आ रहा है, वन हमारा दो बार ही आ रहा है, टू हमारा टू भी एक बार ही आ रहा है, थ्री हमारा एक बार ही आ रहा है, फोर हमारा एक बार ही आ रहा है. क्योंकि कितने एलिमेंट्स है? एक दो तीन चार पाँच छः सात. एक दो तीन, वेट, एक दो तीन चार पाँच सात, 4 1 1 4. स्टूपिड. एक दो तीन चार पाँच छः. What am I doing? 1 दो बारी, 4 को एक बारी, 0 एक बारी, 2 एक बारी, 3 is 2 times. Okay, all right. तो 0 को ले लेगा, एक बारी तो सब आ जाएंगे, फिर अपना 0 ही मिसिंग होगा. इसका मतलब क्या है? द वैल्यूज, इससे हम इसको 0 बना सकते हैं. 1 3 मान लो ये 2 था, ठीक है. अब हमें इसको 6 बनाने के लिए हमें we're confused in the last point. Wait a minute.
Okay, yes, we're really close to the final answer. Just one last step. ठीक है, अब हुआ क्या, हम सबसे पहले हमें वन बनाना होगा, वन से लेकर एन तक जाना होगा, उसके बाद वील चेक द जीरो। ओके ओके, हमें वन को देखना होगा, रिमाइंडर की बात हो रही है, हम पहले वन को देखेंगे। वन टू थ्री फोर टिल 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 k minus वन, राइट। उसके बाद वील हैव अ जीरो, नॉन नेगेटिव, इट्स पॉजिटिव, राइट। तो इनमें से जिसकी वैल्यू कम होगी वो हमारा मिसिंग होगा। जैसे मान लें सबकी 5 है, सबकी 2 है, लेट्स से हमारा के था 3, ऑलराइट, तो हमारे पास होगा 1 2 0। इसकी थी लेट्स से दी 2 1 2। तो आप इससे क्या बना सकते हो, इससे पहले 1 बना दिया, इससे बना दिया 2, इससे बना दिया आपने 3, फिर आपने इससे बना दिया 4, ऑलराइट। फिर आप इससे 5 तो बना ही नहीं सकते, तो क्या होगा 2 3 इंटू 1, 3 टाइम्स 1 प्लस 2, 3 टाइम्स 1 प्लस 2, क्योंकि आप इससे 6 तो बना सकते हो, आप 6 तो बना सकते हो, हाँ, तो आई एम करेक्ट। सो वील एक्चुअली स्टार्ट फ्रॉम 1, ठीक है ना। अब इसके बाद वील चेक कर लेंगे इफ फ्रैक ऑफ रैम 0 is lesser than 0 is lesser than min frequency, then we can add a check कि min frequency ये कर दूँ। Okay, and in the end we are simply returning int answer equals to min frequency star k plus frec min rem. That's it, that's your answer. I'm pretty confident this is correct, but it is not. Frec of frec of rem, what's wrong? 0, oops। नहीं 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 नहीं, one condition here would be different। एक कंडीशन ये भी होगी, मान लो अगर if we had something like this 2 2, these are the and 1, या फिर let's just say 0, तो इससे हम 1 बना देंगे, इससे हम 1 बना देंगे, इससे हम 2 बना सकते हैं, राइट। अब इससे हम 3 नहीं बना सकते, तो 3 would be missing। अब ये क्या माना जाएगा, 0 फ्रीक्वेंसी स्टार के प्लस 0। इसके केस में you would have to return let's say if there was 1 here, तो इसके केस में we would have made 3, फिर यहाँ से 4 बनता, फिर 5 बनता, तो क्या करते प्लस 0 आता, 3 स्टार 1,
This should be correct. Int overflow हो सकता है, I feel like. Oh, wrong answer. Wow. 1357. Hmm, इसको I think we can easily debug. Erase all this. Erase all of this. Okay. You have 1, 3, 5 and 7, and your value is 2. So your remainders would be 0, 1 and that's it. Your remainders would be 0 and 1. 1, 3 के case में भी 1. I'm counting the frequencies. 5 के case में भी 1. 7 के case में भी 1. So the answer should be 2. Output 2. Expected is 0. Minimum non-negative. It's non-negative. ओके अच्छा नॉन नेगेटिव वो तो गलती है हमारी है फिर आई वाज चेकिंग फॉर द नॉन नेगेटिव वन ये कंडीशन हटेगी राइट इट्स करेक्ट वो मैं आई थॉट इट वाज पॉजिटिव वो नॉन नेगेटिव है लेट्स यूज दिस टेस्ट केस डीबग यहीं करते हैं फॉर एंड फ्रॉम आई इनफैक्ट ये जीरो से ही कर दो ना इफ वी डू इट फ्रॉम जीरो एंड इफ वी इरेज दिस एंड देन वी ट्राई टू सॉल्व दिस अबे ये मेरी गलती थी उस सड़ी हुई सी अभी भी हमारा लॉजिक कहीं टूटा नहीं है आई एम नॉट चेंजिंग एनी लॉजिक वो मैंने बेवकूफ़पंती करी मुझे लगा नॉन नेगेटिव की पॉजिटिव ओके अब मेरे को लग रहा है वी माइट बी रॉन्ग हियर ओके जीरो oh -3 को we can actually make it if you're adding shit to it okay so the thing is -3 को ये लाइन गलत है -3 के लिए हमारा रिमाइंडर वुड बी काउंटेड एज 1 1 फिर 5 हाँ if LE is less than 0 तो remainder equals to k minus remainder this should work now yes it does अबे नहीं what are we doing
गर्टी से हटाओ भी. हाँ तो 1 goes with the remainder of expected is 4. 0 की फ्रीक्वेंसी इसने 0 दी. If L is less than 0 0 and remainder is not equal to 0 तो होगा भाई ये. We could do it. कॉन्टेस्ट में तो ये नहीं हो पाता क्योंकि कॉन्टेस्ट में टेस्ट केस हाइड हो जाते हैं. Feels like this easily could be a hard. Took me 3 attempts. Took me an hour, but took me like how long did it even take us? Took me about half an hour. My past self modular stuff. Yep. What did max mean? Minimum excluded. Max minimum excluded. So yeah, we could solve this. I think I might have to take a break. Yeah, I'll take a break. I'll go have dinner and then return in the night. Then actually study for tomorrow. I don't know. Okay then. Bye bye. I'll also rename and like change the thumbnail to solving today's problem of the day. We didn't do any development today. Nonetheless. Okay. Bye.